टाइप 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कर रहे हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इरिड्यूसिबल। सो इसमें थर्ड टाइप है, जबकि एफ एक्स वाई जो कि राइट हैंड साइड है वो x टू द पावर m एंड y टू द पावर n की फॉर्म का है, तब पी आई निकालना है। तो एग्जाम्पल करते हैं। 1991 में एग्जाम में आया है, सॉल्व s प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू z प्लस एक्स वाई। सो पहले इसे डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं, देन वी विल राइट इन फॉर्म ऑफ d and d dash. So del square z upon del x del y is s, p is del z upon del x, q is del z upon del y is equal to z plus एक्स वाई। तो d के फॉर्म में होगा d d डैश प्लस d माइनस d डैश माइनस 1, ये टर्म को इधर ले आए, z इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके हम लीनियर फैक्टर्स कर सकते हैं। d डैश कॉमन ले लिया, d माइनस 1 प्लस 1 d माइनस 1 z is equal to xy. So this is d dash d minus 1 d dash plus 1 z is equal to xy. f d d dash is equal to d minus 1 d dash plus 1. तो cf अगर हम निकालें तो कंपेयर करेंगे इसे बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी से, और दोनों लीनियर फैक्टर हैं, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, each is non-repeated. So this is e to the power, पहले केस में d minus 1 में b is 1, a is 0, c is 1, and second केस में d dash plus 1, this is b is 0, a is minus 1, c is minus 1. So यहाँ पर a is 0 है and b is not 0. e to the power c upon b, that is 1 into x phi 1 by y and plus ax. So this is, and second one plus, it means e to the power minus c, that is 1 into y. This is with minus sign also, the so this is minus 1 into y, by is 0 and ax is minus x, and that is the function of x. So this is CF, function of x. Phi 1 phi 2 arbitrary function. Now we have to find out pi. Pi is 1 upon fdd dash xy into fxy, which is xy. So हम लिख सकते हैं 1 minus d minus, we have taken common, inverse, and 1 plus d dash inverse xy. एक्सपेंड कर लें सीरीज को, सो दिस इज माइनस 1 प्लस डी, हायर टर्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड 1 माइनस डी डैश, एंड रेस्ट वी कैन लीव. सो वी मल्टीप्लाई इट, माइनस 1 माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डी डैश एंड सो ऑन एक्स वाई. दिस कम्स minus xy minus minus plus x minus y, and dd dash is your first with respect to y, and then so plus 1. So xy with minus sign plus x minus y plus 1 is pi. So pi is this, so general solution is CF plus pi. Example 1993 का, solve r minus s plus 2q is equal to x square y square minus z is over. So we write in terms of del square z upon del x square minus del square z upon del x del y plus 2 del z del y, then minus z is equal to x square y. We write d square minus dd dash plus 2
d dash minus 1 z is equal to x square y square. Now what we see, f d dash cannot be resolved in factors in d dash, so we take trial solution. Z is equal to a e to the power hx plus ky, and we write values of these. So d square z ah square e to the power hx plus ky, d dash is ahk e to the power hx plus ky, d dash is ak e to the power hx plus ky. We put the values, so this becomes h square minus hk plus 2k minus 1 a e to the power hx plus ky and is equal to x square y square. Condition is that this has to be 0. H square minus hk plus 2k minus 1 is equal to 0. So from here we can find the value of k. So we take common k 2 minus h, and this is equal to 1 minus h square. So k is 1 minus h square upon 2 minus h. So CF is h, k and a are constants, and we put value of k is this. Now we find pi. Pi is 1 upon f d dash, and here x square y. So we write it in the form that we take all these terms together and we take minus common. So this is say x, 1 minus x to the power minus 1 type. So minus 1, this is the form we are using. So minus 1 minus d square minus d dash plus 2d dash minus 1 x square y square. So we apply this 1 plus d square minus d dash plus 2d dash and so on, plus d square minus d dash plus 2d dash whole square, and next is cube. So next will be cube term into x square y square. So we apply these and see the solution. This comes, so we expand the term. So minus 1 plus first is as it is, d square minus d dash plus 2d dash, and next is square of this. So this will be d4 plus d square d dash square plus 4d dash square, then minus 2 d cube d dash, then minus 4 d dash square, then plus 4 d square d dash. Next is cube. So we know the cube. A plus b cube is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. सो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो टर्म है इसको अगर हम ऐसे लिख लें डी स्क्वायर एंड कॉमन ले लें डी डैश, सो डी माइनस 2, सो ये बी हो गया और ये हो गया ए. तो अगर ए क्यूब मीन्स डी टू द पावर 6 एंड ए स्क्वायर इज डी टू द पावर 4, it means x square y square d to the power 4 won't give any answer. b cube also will be d dash cube and d cube, so it won't also give. So we have only this term which will give us answer in this. We will take this only, 3 into d square and d dash d minus 2 whole square, which is 3d square d dash square d square plus 4 minus 4d.
So 3d square d dash square d square minus 4d plus 4. We will take only this much. So plus 3, we can open it 3 d4. Again this won't work. D dash square 0, it will give 0. Then minus 12 d cube and d dash square. Then plus 12 d square d dash square. So these also won't work out, and so on, x square y square. So we now apply these terms. It gives minus 1 plus d square on this, means x के respect में twice. So y square as it is, and 2x and then 2. So 2y. This is minus outside. Later on we will include. So minus d dash. It means minus once with x, once with y. So 4xy. Then 2d dash once with y. So plus 2 x square 2 to 4y. d4 will give 0. d square d dash square means when we do with respect to y, 2y and then 2. So same with this 2, 4. So plus 4. Plus 4 d dash means 2x square. Minus cube is there, so it will be 0. So we won't take this. 4 d dash square means 4 2 into 2 x plus 4. This will be 2 into 2 4y plus 12 into 4. This we had seen here. D, this term is 4. So we get minus 1, and here x square y square is there, so we can write here x square y square. So minus x square y square minus 2y square plus 4xy minus 4x square y, and plus 4 and plus 48 is minus 52. Then 8x square and 16x and 16y. So this is pi. In book it is given here negative. I think that is wrong. So add CF plus pi and get the general solution. So type 4, and then we will be having miscellaneous. In that we will have combination of these 4. So this question is of 2005. All d minus 3d dash minus 2 whole square z is equal to 2e to the power 2x sin. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एफ डी डी डैश इज डी माइनस 3d डैश माइनस 2. सो ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं. d minus 3d dash minus 2 times. So CF is, अगर हम कंपेयर करें BD minus AD dash minus C से, तो B is 1, A is 3, C is 2. So it will be e to the power C upon B is 2x, phi 1 y plus A is 3, B is 1. So 1 plus 3 repeated है, इसलिए x phi 2 1 into y plus ये इसकी वैल्यू e to the power C upon B x phi 1 ay plus b phi 1 phi 2. Now pi
is equal to 1 upon d minus 3d dash minus 2 whole square 2e to the power 2x sin y plus 3x. So what we will do, 1 upon 2 तो हम इधर ले सकते हैं, e to the power 2x है, इट मीन्स d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 2 से, और d डैश का टर्म नहीं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनस 3d डैश minus 2 whole square and e to the power 2x sin y plus 3x. Basically we can write this also here, 2e to the power 2x of d plus 2 whole minus 3d dash minus 2 whole square sin y plus. So this can be written as 2e to the power 2x, ये 2 cancel हो गया, so d minus 3d dash होल स्क्वायर साइन y प्लस 3x. अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई. दिस इज इक्वल टू x to the power n upon b to the power n factorial n phi ax plus. तो सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम लिख सकते हैं 2e to the power 2x into x to the power 2, n is 2 here, to the power n. So n is 2 here upon b. b is coefficient of d which is 1 here, 1 to the power n factorial and factorial 2. Phi means sin y plus 3x. So this comes 2 factorial is 2, this cancels out, e to the power 2x x square sin y plus 3x. सो ये पी आई हो गया, एंड सी एफ हम ये निकाल चुके हैं. एड सी एफ एंड पी आई एंड गेट द जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल है टाइप 4 पर. सॉल्व आर माइनस 3s प्लस 2t माइनस p प्लस 2q is equal to 2p plus 4x into e to the power minus y. सो पहले हम लिखते हैं, हमें पता है r is del square z अपॉन del x स्क्वायर. सो वैल्यूज़ रख देते हैं, del square z अपॉन del x स्क्वायर माइनस 3 del square z अपॉन del x del y प्लस 2 del square z अपॉन del y स्क्वायर माइनस del z अपॉन del x 2 del z upon del y into 2 plus 4x e to the power minus y. So d के फॉर्म में लिखें, सो d स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर माइनस d प्लस 2d डैश z इज इक्वल टू 2 प्लस 4x e to the power y माइनस साइन के साथ. Then we have this as f d d dash. अब इसके linear factors. So what we do, we take this in two terms, d d dash and this term minus d plus 2d dash square minus 2d d dash from here plus 2d dash. And now we can see, we take d common, d minus d dash minus 1, we take d dash minus d and
minus. So now this is common. So d minus d dash minus 1 is common and d minus 2d dash. So we got linear factor and these are not repeated, distinct. So we can write down, we compare it, bd minus ad dash minus c, b is equal to 1 in first in this, and a is 1 and c is 1, and in this b is 1, a is minus 2 and c is 0. So we write cf as e to the power c upon b, that is 1x phi 1 by y plus x, and from second e to the power c upon b, this is 0, phi 2 y, a is plus 2, so this will be plus, a is here plus 2, so this will be plus. So we can rewrite, so we got CF. Now we need PI. PI is equal to, we have factors, we will write in this form, 2 plus 4x e to the power minus y. So we write it, we can break it 2 e to the power minus y and 4x e to the power minus. So first we do with 2 e to the power minus y. It means we have replaced d by d plus 0 because x is not here, so 0 into x. So d plus 0 and g dash with minus 1. So we can write 1 plus 2x. 2 we have already. We expand this. So we simplify the terms. The first becomes d minus 2d dash plus 2, and second is d minus d dash 1 plus 2x. We take 2 common from here and d common from here. So 2, first we take 2, so it becomes 1 plus d minus 2d dash upon 2, and from here we took d, so 1 minus d dash upon d, 1 plus 2. अब हम इसे ऊपर ले जाकर एक्सपेंड कर लेंगे, 2 कैंसिल हो गया अपॉन d, and this is 1 plus d minus 2d dash upon 2 to the power minus 1, 1 minus d dash upon d to the power minus 1, and 1 plus 2x. So this becomes e to the power minus y upon d, 1 expansion gives minus 1 by 2 d minus 2d dash, and because 1 plus 2x is, so we will stop here, and so on, 1 plus d dash upon d, here also we will stop, 1 plus 2x. अप्लाई करेंगे ये e to the power minus upon d, 1 into 1, 1 plus 2x, then we have 1 plus d dash upon d. So what happened that we took this 1 and 1 plus 2x is here, now minus 1 by 2 d by 2 is here, and when we multiplied 1 by d dash upon d, so d dash upon d, and then minus minus plus, 2 cancels out, and d dash 1 plus 2x. तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये 1 plus 2x पर अप्लाई करने हैं. अब d डैश क्या है, y पर अप्लाई होगा, तो y इसमें है नहीं, तो ये 0 हो जाएंगे. ओनली टर्म इज रिमेनिंग माइनस d बाई 2. सो 1 plus 2x, ये आउटसाइड तो वही चल रहा है, एंड दिस इज d by 2 is 1 by 2, d on 1 plus 2x means differentiation of this is 2. So ये बन जाएगा 1, ये 1 कैंसिल हुए, सो e to the power minus y upon d into 2x. 1 upon d का मतलब है इंटीग्रेशन, सो इसका मतलब हुआ e to the power minus y
2x² अपॉन 2, सो 2 कैंसिल हो गई, e⁻y(x²), ये pi आ गया. नाउ वी कैन ऐड CF प्लस pi एंड गेट द जनरल सॉल्यूशन. इसके बाद अब जो है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इन चारों में से किन्हीं का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल हैव नाउ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, और उसमें पास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं मिसलेनियस से.